Okay. Student, today our topic is Inshra Mumtaz. You have also write the roll number with your name. Okay. Okay, now students, my topic of the today lecture is start, and it has, as you know, that our course outline is exercise 15.1, and questions are 17 to 24. Okay, and what is the exercise 15? It is basically related to potential, velocity potential, and it has the gradient of the f and curl of the f, divergence and curl of f. Okay, first of all, I will start from here. Are you listening my voice, Nurulan? Okay, exercise is 15.1. It is related to the vector fields. Okay. Chapter number 15 is start topics in the vector calculus. Okay. For example, you look at in the sea, there is the vorticity in the cloud. Okay. This is called the vorticity, and this is related to the uh, curl. Okay. Curl of the vector. That is basically the vorticity. Vorticity means that there is the rotation uh, in air, in cloud, in water. ओके, एफ ऑफ एक्स वाई इज बेसिकली अ वेक्टर फील्ड, और उसके बारे में आपको आज डिस्कशन करनी है हमने अबाउट द टॉपिक ऑफ द डाइवर्जेंस एंड द ग्रेडियंट. Gradient field is gradient phi is equal to partial by partial phi of I plus partial, means phi is a function, is a vector field, and you have to take the gradient. So gradient of phi is the taking the derivative with respect to x according to I direction plus uh, partial phi by partial y with j direction plus partial by phi by partial z with k direction. Okay. For example, sketch the gradient field. Phi of xy is equal to x plus y. So gradient of phi is means that partial by partial xi, partial by partial of phi over partial xi plus partial phi by partial yj. So for example, if you take the derivative of the phi, that its result is 1 plus 0 is 1. So 1 into I is I, and partial phi by partial y is partial by partial y, derivative is 1. So its remaining value is j, I plus j. Okay. Okay, for example, I have to complete its questions. And okay, the main topic is divergence. If f of xy is equal to small f of xy zi plus g of xy zj plus h of xy zj, then we define the divergence of f, return divergence of f to be the function given by divergence f is equal to partial f by partial x plus partial g by partial y plus partial h by partial z. Means the section of the I part is f, section of j part is g, and third section is h. We will denote it by f, g, and h. Okay. The coefficient of the I values are f, j values are g, and k values are h. And also your student notice that there is not the sign of the directions. Okay, I, j, k is not mentioned here. Okay, and what is the curl f? Curl f is basically this expression, but in a shorter way, I explain that it is a determinant of gradient and f. F of curl of f is basically gradient cross f. Okay, means like this. Curl f is equal to ijk, gradient is partial by partial x, partial by partial y, partial by partial z, and here the value is
F, G and H। मैम ये डाइवर्जेंस वैसे होती क्या है? जनरल लाइक फॉर्मूला तो चलो वो देख लिया है, वैसे क्या होती है? डाइवर्ज करना स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर आपने अगर एक, मैं आपको इसका वैसे फिजिकली अगर डाइवर्जेंस के बारे में बताऊं तो आप जैसे कि कहें कि किसी पॉइंट के ऊपर जैसे कि कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना, अगर आप कह लें कि सिंक के अंदर अगर एक पानी है, ठीक है, वो जैसे अगर आपने उसको जरा स्टोर कर दिया, जरा उसको ना पानी को रोका है, तो अचानक आप पानी ओपन करते हैं तो वो एकदम से ना मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो एक सेंटर पॉइंट की तरफ जहाँ पे कि उसने पानी ने जाना है वहां से जाना शुरू हो जाता है ना, ठीक है। तो ये उस पॉइंट को इसी तरीके से अगर वो जो रोटेशन हो रही है ना, वो तो आपका कर्ल है, लेकिन वो जिस एग्जैक्ट पॉइंट के अंदर एंटर हो रहा है वो आपका डाइवर्जेंस पॉइंट के इस पॉइंट की तरफ मीट अप कर रहा है, ठीक है। और ये मैंने फिजिकली तौर पे आपको इसके बारे में बताया है। लेकिन अदरवाइज आप लोग जो है वो डाइवर्जेंस के बारे में इसके ऊपर डेफिनेशंस में जो है उसने तो खैर सिर्फ उसने मेथडोलॉजी आई थिंक एक्सप्लेन की है कि लेकिन अदरवाइज ये है कि बेसिकली ये है कि तीनों का डेरिवेटिव्स के तीन सेक्शन करके उसके तीन के साथ आप अकॉर्डिंगली सेपरेट जो है वो डेरिवेटिव मेंशन कर लेते हैं, लेकिन आपको फिजिकली तौर पे ग्राफिकली तौर पे आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं कि मैं चाह रही हूँ इसकी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, तो आप इसको भी मेंशन करके मैं इसके ग्राफ दिखाना चाह रही हूँ। फील्ड, अच्छा जी, खैर फील्ड एफ है तो देखिए सोर्स और द सिंक है एट अ पॉइंट है, ठीक है। कैलकुलेट एज द डॉट प्रोडक्ट इमेजेस में अगर देख लो इसे, द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड एफ इज अ स्केलर फंक्शन रिप्रेजेंटिंग इट्स लोकल एक्सपेंशन और कंप्रेशन सोर्स और सिंक एट अ पॉइंट, ठीक है। कैलकुलेट एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डेल एंड द वेक्टर फील्ड, डॉट प्रोडक्ट में आईजी के नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसकी जी ये जरा देख रहे हैं आप इसकी फिगर्स कि आप देखें ना कि यहाँ पे एक अंदर की तरफ ही पॉइंट जो है वो अगर करते जाए वो खैर उसकी आगे वैल्यूज हैं कि वो लेस देन जीरो आ जाए या ग्रेटर देन जीरो आ जाए डाइवर्जेंस की। बेसिकली इसका यही है कि किसी एक पॉइंट की तरफ ना रोटेशन मूव करते हुए सेंटर की तरफ जाती जाए, ठीक है। अच्छा अब ये है कि वो यानी कि देखिए सिंक भी हो सकता है, पानी निकल भी सकता है। अक्सर जो है अगर आप देखें कोई पानी जो है वो बंद हो गया और वो पानी उबल रहा है बाहर की तरफ आ रहा है, आप अक्सर कहते हैं कि ये जी पानी अंदर की तरफ नहीं जा रहे, पानी बाहर की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। तो उसकी वैल्यूज जो है रोटेशन की ग्रेटर देन जीरो आपके पास आएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप अगर एक गिलास के अंदर पानी लेते हैं और उसके अंदर ना आप उसे स्टेयर करते हैं, रोटेशन करते हैं, उसको चम्मच के अंदर से ना पानी को मिक्स ऐसे करके जरा राउंड शेप में से मिक्स करते हैं, तो आप नोट करेंगे कि उसके अंदर एक ना वर्लपूल सा यानी कि एक वर्टिसिटी सी जनरेट होगी और वो पानी जो है वो गिलास के अंदर की तरफ ही राउंड रोटेशन की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। अक्सर आप रोड्स पे देखें तो जो है पानी उबल रहा होता है, फ्लश जो है वो आउट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहां पे रोटेशन इन की बजाय आउट हो रही है, ठीक है। ये इसकी रोटेशन ये डायरेक्शन है ऑफ द मूवमेंट है, ठीक है। तो ये है कि एक पॉइंट के ऊपर ना कन्वर्ज करना, एक पॉइंट की तरफ ही उसका मूव, एक पॉइंट की तरफ ही उसको जो है उसकी डायरेक्शन का हो जाना, ठीक है, रोटेशन करते हुए। और वो जो रोटेशन हो रही है ना वो आपकी वर्टिसिटी को जनरेट करती है, और वर्टिसिटी जो है वो आपकी कर्ल ऑफ एफ को डिनोट करता है। अच्छा जी, खैर ये तो वैसे जनरली तौर पे बात होगी। अच्छा, तो वो उसके लिए जो जो भी फ्लूइड है उसकी जो मूवमेंट है उसको हर डायरेक्शन के साथ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आपका डिस्प्लेसमेंट ही होती है, रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है। कि एक पानी जो है वो अगले पॉइंट के ऊपर कैसे कैसे मूव कर रहा है, तो वो एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ सबके साथ देखा जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे जरा देखिएगा तीसरा, मैंने इसके बारे में आपसे बात करनी थी।
क्वेश्चन नंबर है 15.1 के, जो मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 17 से 24 तक है। ठीक है, फाइंड द, आज हम फाइंड द डाइवर्जेंस एफ एंड कर्ल एफ। ठीक है, अब ये 17 18 19 तो चलने छोड़े। एक क्वेश्चन जो है मैं वीडियो आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, और जो मेरी अपनी होगी एक और जूम लेक्चर की। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं आप कि क्वेश्चन नंबर 20 21 और 22 जो है वो, आप मुझे लग रहा है कि उसके अंदर कुछ है, और उसमें मेरा ख्याल है कि चलें आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21 करा देते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि डेरिवेटिव जो होता है, मैं जनरली तौर पे बता दूं कि डेरिवेटिव के बारे में। जी, जो डी बाई डी एक्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल सिंपल वे में मैं, ई रेज पावर एक्स वाई है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका डेरिवेटिव आपको पता होगा that it has the value is e raised power xy, and there you then you have to take the derivative of the power xy. So is equal to e raised power xy, and derivative of xy is 1 into y. So y e raised power xy. Okay, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं इसके बारे में थोड़ा सा, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 + x²। ये चीज के डेरिवेटिव्स आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, लेकिन अगर मैं x की जगह पे इस तरह कर दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x कर देती हूँ। ठीक है, देन यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव 1/1 + x², 2x होल स्क्वायर। ओके, एंगल का डेरिवेटिव, एंड फर्दर जो है वो आपको 2x जो होगा ना एंगल, उसके साथ साथ डेरिवेटिव आपको रखना पड़ेगा। 1/1 + 4x², और साथ इसका 2, 2 × 1। ठीक है, तो इस तरीके से 2/1 + 4x², इस तरह से मीन्स आपको ये बताया जा रहा है कि इस तरह आप जो है ना, इसमें आगे आप फर्दर इसके अंदर कर देते हैं। ठीक है, एंड देन इफ यू हैव अ डेरिवेटिव ऑफ द साइन 2x, then its result is cos 2x. But then again in the multiplication you have to take the derivative of the angle. Angle is 2x. So cos of 2x, and it is 2 into 1. So basically its result is 2 cos 2x. Okay. This is the result of the d by dx of sine 2x. Okay, now I am coming to the point of the question exercise 7.1. Exercise is 15.1 and question number 17 to 24. Okay, and I am going to start the question number, I think so, 19, 20. It's up to you, student. But I think so, I will share with you the two videos. Okay, one is I think so related to question number 21, and one video should be related to 20 or 22 question. I will check. Okay, first of all, I think so I have take the क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, कि इसके लिए आप कैसे, और एक वीडियो में 20 या 22 से रिलेटेड जो है ना, जिसमें कि एक्सपोनेंशियल भी आ गया है। जी हसनात। अच्छा, मैं वो बस ऐसे टच हो गया था। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर इज 21। फाइंड द divergence f and curl f. Okay, and this is the, for example, I start here solution. This is the given function, given velocity vector f of x y z is equal to 1/x² + y² + z²
whole square root into xi plus yj plus zk. Okay. First part is related to divergence of f, and divergence of f is equal to, student. First of all, I have to find out the divergence of f. Okay, and also control C, for example. No, I have to make the parts of this f of x, y, z. This is equal to x over x square plus y square plus z square whole under root I. Okay, I divide this function according to ijk. Y over x square plus y square plus z square whole under root j plus z, last one is z over x square plus y square plus z square and its whole under root into k. Okay, and now student, these are basically f of x, y, z is equal to fi plus gj plus hk. According to the statement, I sectioned the f of xyz into f, g, and h. Okay, and also I mentioned here that it is my equation number 1. Okay, for f part is x over x square plus y square plus z square whole under root, and g part is y over x square plus y square plus z square whole under root, and h part is z over x square plus 1. Okay. Now from the equation number 1, okay, f, g, and h. Okay, now I will solve the divergence of f. Divergence of f, what is the formula? Its formula is divergence of f is equal to partial f by partial x plus partial g by partial y plus partial h by partial z. Okay, derivatives are changed, and also the function well section are different, f, g, and h. Okay, you can also check into the book. Um, um, for example, yes, divergence of f is partial f by partial x plus partial g by partial y plus partial h by partial z. Okay, now I put here the values from equation number 1. Equation number A. Okay, by putting the values of A. Okay, divergence of f is equal to partial by partial x of small f. F is x over x square plus y square plus z square ka whole, its whole under root, and partial by partial y is y over x square plus y square plus z square whole under root, and the last one is h plus partial by partial z of z over x square plus y square plus z square and its whole under root. Okay, now how we will complete its derivative? ये बताइएगा इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट आइडिया दे. आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं स्टूडेंट, के एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर की होल पावर जो है -1/2 प्लस partial by partial x, partial by partial y,
वाई एंड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की होल पावर है -1/2। सिमिलरली प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जेड इंटू जेड ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र whole power -1/2. Okay, now students, give me the idea. Want to check. Wait. जी आप थोड़ा मुझे बताइएगा स्टूडेंट। मैम सबसे पहले जेड जेड से कैंसिल नहीं हो जाएगा लास्ट वाले में, उसके बाद फिर इसके बाद सेपरेट हम लगा देंगे। मीन्स कैसे, दोबारा से बताएं। मैम बल्कि यहाँ पे देखना पड़ेगा इस तरह, वो अभी सही समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं, मैं ये आपसे कह रही हूँ कि इसका क्या तरीका आप अप्लाई करेंगे। कोई और स्टूडेंट बताए। जी स्टूडेंट, कोई और स्टूडेंट बताए। कैसे डेरिवेटिव कैसे लेते हैं भी बताए ना स्टूडेंट। मैम प्रोडक्ट रूल होगा। हाँ जी, इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है स्टूडेंट, क्वोशंट रूल भी अप्लाई हो सकता है, प्रोडक्ट भी। अब ये जो स्टूडेंट कह रहा है कि समझ नहीं आ रही, किस चीज की समझ नहीं आ रही स्टूडेंट, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हो सकता है और क्वोशंट रूल भी अप्लाई हो सकता है ना। ठीक है, प्रोडक्ट रूल कैसे होता है जी बताइएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट। यस, बताएं जरा स्टूडेंट, आप लोगों को डेरिवेटिव नहीं निकालने आते इन द फोर्थ सेमेस्टर यू आर। मैं तो इसलिए मैंने जरा स्टॉप किया है कि आपको मैं बता दूं कि आपने प्रोडक्ट रूल कैसे होता है जी, कोई फार्मूला बताए स्टूडेंट, और क्वेश्चन रूल का फार्मूला बताए स्टूडेंट। प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इंटू जी ऑफ एक्स। ओके, और इसके अलावा आप उसका क्वेश्चन रूल का बताइएगा। जी क्वेश्चन रूल का। यस स्टूडेंट, इसमें प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई किया जा सकता है और क्वेश्चन रूल भी अप्लाई किया जा सकता है, तो आपकी मर्जी है। चाहे हम देखें प्रोडक्ट रूल से भी लगा सकते हैं, लेकिन चलें क्वेश्चन रूल कर देते हैं। कंट्रोल ये, अगर आप इसको क्वेश्चन रूल में ले जाएं तो काफी लंबा काम अच्छा खासा हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे जरा देखें स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा, जो आपके पास क्वेश्चन रूल का फार्मूला है वो मैं मेंशन कर रही हूँ इन डेरिवेटिव। दैट इज u बाय v होल डेरिवेटिव इज इक्वल टू v स्क्वायर v डॉट u डेरिवेटिव माइनस u डॉट v डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो ये क्वेश्चन में यानी ऊपर वाली वैल्यू है ये आपके पास u कहलाएगा एंड डिनोमिनेटर में आपके पास v। ठीक है, तो आप जरा देखें कि डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर है u वैल्यू है और नीचे वाली वैल्यू v है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट में आपने जो है ना इसको लेकर जाना है। तो यहाँ पे जरा देखिए, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो है आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र का होल अंडर रूट है और उसका बी स्क्र आ गया है।
ठीक है। और ऊपर जो है वो आप मेंशन कर रहे हैं कि आपने कहा कि ये v जो है ऊपर वाली वैल्यू को आप v कहेंगे, ठीक है। v एज इट इज, सॉरी ठहरिएगा एक मिनट, u बाय v, ये वाली वैल्यू आपके पास u होगी और ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू है ये आपके पास v होगी, ठीक है। तो v एज इट इज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर एज इट इज, ठीक है। अम, इसकी होल पावर 1/2 कर देनी चाहिए थी मुझे, चले इसको एज इट इज कर दिया, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, यू का जो डेरिवेटिव है माइनस एक्स एज इट इज, ये जगह बहुत कम मैंने जरा चूज कर ली है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर की पावर ना अंडर रूट की बजाय मैंने 1/2 कर दी है। अच्छा आगे प्लस किया, ठीक है। सिमिलर बिहेवियर आपका सेकेंड वैल्यू के साथ आप करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू u है और नीचे वाली वैल्यू जो है वो v, तो आप यहाँ पे भी उसी तरह से लेंगे। जी स्टूडेंट, मैं इसमें अंडर रूट वाली वैल्यू को ना होल पावर 1/2 कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर की होल पावर है 1/2, डी बाई डी वाई ऑफ वाई, ओके। यहाँ पे देखें अब u जो है वो y है और v जो है वो ये वाली वैल्यू है, ठीक है ना। हर एक में आपने अब ये u है और ये आपके पास v है, ओके। और सिमिलरली आपके पास z में भी ये u हो जाएगा और ये v आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, फिर माइनस कर दिया जी, इसका मैं इसी के बारे में सेकंड वाले के बारे में आपसे बात कर रही थी। देखें v जो है वो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u इज d बाई डी वाई ऑफ y माइनस u is as it is, u is y, numerator value is u and denominator value is v, okay. Now d by dy of x square plus y square plus z square whole power 1/2, okay. And in the denominator x square plus y square plus z square and its value is whole under root square of the whole under root, okay. And square and under root will in denominator will be cancel out and the last one value is z, okay. So here third value is also we apply the same behavior with the third value of h, uh, f, g and h, okay. Z over x square plus y square plus z square, here z is the numerator u and x square plus y square plus z square is the denominator, so its derivative would be like the same way. So I will take the derivative x square plus y square plus z square whole power 1/2 and d by dz of z minus z and d by dz of x square plus y square plus z square whole power 1/2. I apply the quotient rule formula x square plus y square plus z square whole under root square. So it's also in the denominator, it's also under root and square are also cut to each other, okay. Now divergence of f is equal to G. I think so one part will be complete in this video and one next part curl of f will be complete in the next video, okay. X square plus y square plus z square whole power 1/2, for example, under root over 1. Its derivative is 1 minus x and its derivative is 1/2. Power is multiplied by x square plus y square plus z square and 1/2 minus 1, okay. The derivative and d by dx of x square plus y square plus z square. No, not visible. Plus z square. Okay. Student, look at this. Derivative of x square plus y square plus z square should be like this. That power is multiply. Okay.
And then there is the -1 in the power, and also in the base value you have to take the again derivative with it. Okay, over, for example, its power is x square plus y square plus z square. Only power is 1. Okay, in the same behavior with the y-axis and with the z-axis we will do. Okay, plus x square plus y square plus z square whole power is 1 by 2, and derivative of y is 1 minus y, and also 1 by 2 multiply, and then in the power there is the -1, x square plus y square plus z square whole power 1 by 2 minus 1, and the d by dy of x square plus y square plus z square. And in the denominator again we have the same value, that x square plus y square plus z square. Okay, power and under root are cutting with each other. Now with the same behavior with the z value. Okay, plus, and there is the value x square plus y square plus z square, and in the numerator is x square plus y square plus z square whole power 1 by 2, and d by dz of z is 1 minus z, and its value is 1 by 2 into x square plus y square plus z square whole power 1 by 2 minus 1. Okay, and uh, derivative of d by dz. Okay, okay, x square plus y square plus z square. Okay, question is going to lengthy. Okay, okay students, I will share the two videos. One is related to curl f and one is related to divergence f. Okay, with the detailed explanation. Divergence f is equal to, so here is the value only, we have the x square plus y square plus z square whole power 1 by 2. Okay, because 1 is multiply. Okay, minus x by 2. Okay, x square plus y square plus z square, and 1 by 2 minus 1 is equal to, students, -1. Okay, for example, 1 minus 2 by 2 is equal to -1 by 2. 1 by 2 minus 1 is -1 by 2. And now I take the derivative of the x square plus y square plus z square. That is equal to 0. No, 2x. 2x. 2x plus 0 plus 0. Derivative with respect to y is 0, 0. So z is 0. With respect to x, if there I take the derivative with respect to x, then x value is 2x, and the other y and z square are equal to 0. Similarly, over x square plus y square plus z square plus same behavior with the other values, that x square plus y square plus z square whole power 1 by 2 minus y by 2 into x square plus y square plus z square whole power -1 by 2 into 0 plus 2y plus 0 over x square plus y square plus z square. Okay, student. Y value is 2y. So next value is with z plus x square plus y square plus z square whole power 1 by 2 minus z by 2 into x square plus y square plus z square whole power -1 by 2 into 0 plus 0 plus 2z over x square plus y square plus z square. Okay, now student, it's what are its remaining values are. Basically, this is equal to 2x whole value is, and 2 are cancelled with each other. Similarly, this value is equal to 2y. So 2 and
2 are cancelled with each other, and similarly 2z and 2 and 2 number is cancel out with with each other. So now students, I also take the like this way, that I also take the LCM. Okay, x square plus y square plus z square is whole common with the whole value. Because I want to take the denominator line in this way. Okay, this is the x square plus y square plus z square, and also I solve the sum step. Okay, x square plus y square plus z square, x plus x square plus y square plus z square. Okay, basically x multiplied by x. Okay, this value 2 is cutting with this value, and x is multiplied by this value. So I will take, check it, what will be the x square plus y square plus z square whole power 1 by 2, student. Then you have to only simplify these values, minus x square plus y square plus z square whole power minus 1 by 2 plus x square plus y square plus z square whole power 1 by 2. आगे आपने simple, student, you have to only simplify it. Minus y square x square plus y square plus z square, and then plus minus x square minus y square, okay, plus x square plus y square plus z square whole power 1 by 2 minus z square into x square plus y square plus z square whole power minus 1 by 2. Okay. Now you notice that there are the three values which are same. Okay, 1, 2, and 3. So I mention here 3 times into x square plus y square plus z square whole power 1 by 2. Wait, student.